So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So in last class we discussed about the DNA synthesis inhibitors. So this is the continuation. Okay. So पिछले क्लास में हमने फ्लोरोक्विनोलाइन्स कवर किया था. So today I'm gonna give you some information about the uh, another drug या class वो अपने आप में individual class है, that is the metronidazole. Okay, so this is also a group of antibiotics that target the synthesis of DNA in bacteria and other organisms. Okay, and they are also known as the DNA synthesis inhibitor. Or metronidazole, also known as the 5-nitromidanazole, prevents synthesis of nucleic acids, effective against many bacteria and protozoans. Okay, so basically DNA synthesis inhibitors only target the DNA synthesis of the bacteria and it does not harm the eukaryotic cell. It just targets the prokaryotic cells. Okay, so now metronidazole and related 5-nitromidazoles आर नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमंस. मैंने आपको अभी बोला बिकॉज और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज रिड्यूस्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड फेरोडॉक्सिन कंटेन सल्फर एंड आयरन एंड फाउंड इन एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स बट नॉट फाउंड इन ह्यूमंस एंड एरोबिक बैक्टीरिया. तो जो फेरोडॉक्सिन नाम का जो प्रोटीन होता है दैट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स and not present in the eukaryotic cells, hence it is non toxic to humans. So वो क्या करेगा कि इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू मेट्रोडिनाजोल. जो प्रोटीन है वो एक इलेक्ट्रॉन मेट्रोडिनाजोल को वो डोनेट कर देगा एंड हेंस इट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स दैट डैमेज द डीएनए एंड मेक द डीएनए फ्रैगमेंट. सो विदाउट अ डीएनए एज अ टेम्पलेट, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि without a DNA as a template it can't synthesize the nucleic acids, that is DNA or mRNA, and hence may cause the cell death. Okay, so basically वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो बेसिकली क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी. सो फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, डीएनए को डैमेज करेगा एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू सेल डेथ. ओके, सो नाउ मेट्रोडिनाजोल इज टेकन पर ओरली, आईवी में भी दिया जा सकता है एंड लोशन और क्रीम्स और टॉपिकली भी अप्लाइड हो सकता है. ओके, एंड पेन इट इज मेनली effective against the Helicobacter pylori, that is common bacteria for causing gastritis and peptic ulcers, used in combination with antimicrobials and proton pump inhibitors for the triple therapy. Okay, the next bacteria it affects, that is the lactobacillus and another anaerobes that cause the bacterial vaginosis. Protozoan infections में कौन कौन सा आ जाए? that is amoebiasis, infection in the gut caused by Entamoeba histolytica, the Trichomonas vaginalis that causes vaginosis, and giardiasis that is known as the beaver fever or infection in the gut by Giardia lamblia. Okay, so the metronidazole penetrates into body and fluids. Okay, example vaginal secretion, seminal fluid, saliva, breast milk and cerebrospinal fluid, but does not cross the placenta. Okay, तो placenta cross नहीं करेगा तो it is safe during the but it does not cross the placenta. So it is a teratogenic drug. Can treat anaerobic bacterial infection. Example Clostridium difficile, that such as pseudomembranous enterocolitis in people taking other एंटीबायोटिक्स. ओके, सो वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है एंड इट कैन penetrate some body tissues and fluids but not cross the placenta, and most often it can treat the anaerobic bacterial infection. Okay, such as Helicobacter pylori, lactobacillus and the Clostridium difficile. Okay, so moving on towards the next, metronidazole is synthesized in liver and it is the inhibitor of the cytochrome 4p450 enzymes and it slow down the metabolism of other medications. Okay, प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ मेडिकेशन है वो रुक जाएगी. ओके, सो साइड इफेक्ट्स में कौन कौन से होंगे? दैट इज इट डिक्रीजेज द एपेटाइट, मतलब भूख लगना कम हो जाएगा, नोजिया, मेटालिक टेस्ट आएगा, हेडेक्स एंड स्टमक क्रैम्प्स. And increased doses or chronic treatment may cause seizures, confusion and peripheral neuropathy. And it is also contraindicated during the first trimester of the pregnancy. Okay,
सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में वो जब प्लेसेंटा नहीं बना होगा तब वो हार्मफुल होगा, बट एक बार प्लेसेंटा बन गया तो और आप दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा. ओके, सो डाइसल्फिरामाइड रिएक्शंस ऑल्सो अकर बिकॉज अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है एंड मेट्राडिनोजोल उसने ले ली, सो इट विल कॉज सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक्स. क्यों होगा? बिकॉज इट इज इनहिबिटिंग द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस. ओके, सो बाय इनहिबिटिंग द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इट इज stopping the process and the accumulation takes place and it induces the disulfiram-like reaction. Okay, and it excess actions of the drug is being compromised. Okay, so simple hai. So here's a mnemonic. Okay, so here's is a metron ring that represents the metronidazole. Okay, the metron ring represents the metronidazole, and here is the cell which is crushed that shows us that it is the inhibitor of the cytochrome P50. Here a aquarium is set up and it is filled with water, showing us the anaerobic bacteria. Okay, and here there are the three compartments. So a closet represents the Clostridium difficile, the helicopter represents the Helicobacter pylori, and the milkman, the person that is a milkman, shows us the Lactobacillus. So now moving on towards the garden, here is a gardener representing the Giardia lambia. Okay, and he has some of the bandages on his hand, showing us that it is an example of the neurotoxicity or peripheral neuropathy. And also there are the alcohol bottles showing us the disulfiram reaction, and the gardener plants are eaten away by the Triceratops and the giant amoeba, representing the Trichomonas and Entamoeba respectively. Okay, so amoeba जो plant खा रहा है, that is represented by Entamoeba, and the Triceratops is represented by the Trichomonas bacteria. And his wife is seeing all this. He is not happy that it indicates that it is indicated in the contraindicated during the pregnancy. और कौन सा ट्राइमेस्टर? दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो ये निमोनिक समझ में आएगा. सो लेट्स टेक अ रिकैप कि मेट्रोडिनाजोल इट इज अ एंटीबायोटिक दैट टारगेट्स एनारोब्स, example Clostridium and protozoans like Giardia. Protein called as ferroxin that is only and only present in the prokaryotic cells, and that allows the metronidazole to generate free radical via donating an electron, and free radical will damage the DNA and additional nucleic acids cannot be synthesized, hence leading to the cell death. Okay, so I hope आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा. So here's a mind map. Okay, metronidazole, cytochrome 450 inhibitor, Trichomonas, amoeba, Helicobacter pylori, Lactobacillus, Clostridium difficile, Giardia lambia, peripheral neuropathy, contraindicated pregnancy, फिर ये neurotoxicity and the disulfiram like reactions. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में होगा. कंपेयर योर आंसर्स एक बार आप इधर पे देख लीजिए एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर्स हियर. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में होगा. अगर नहीं आया हो और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू leave in the comment sections below, and guys please do like, share and subscribe to my channel because it gives a lot of motivation every time to me, and it means a lot to me. Every single of you is a support system to me because it always gives me a motivation to make more and more videos, and it takes a lots of efforts to collect all this information and represent to you. So गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करिए कि आपको कुछ डाउट हो या दिक्कत हो. एंड फॉर मोर नोट्स और या फिर जो भी आपको मटेरियल्स है वो स्टडी रिलेटेड, MBBS रिलेटेड, स्पेशली अकॉर्डिंग सेकंड ईयर आपको चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल that is given in the link in the description below. And special thanks to osmosis.org for providing such beautiful animation images. So until then, stay safe, stay happy, and I'll see you soon. Thank you.